Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Mm, Yes or no? So I think everything seems to be fine, and I am properly audible and properly visible. Yes, that's good. So hello. Hello Rishpana. Good morning, beta. So things are कल की जो particular news थी, कल की जो social media headings थी, या social media के जो discussions थे, they were like next level, है ना? Yes, predictions were there. There was a time when Indian rupee dollar value जो है that reaches to 93.25 rupees. Uh, Hi Krishna. सो इसका एक पर्टिकुलर वो काफी ज्यादा डिस्कशन में था कल सोशल मीडिया में इवन देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वीडियोस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर जो उनके स्पीचेस थे जिसमें ही टॉक अबाउट द डॉलर रुपी वैल्यू एंड अदर थिंग तो उसके बारे में काफी ज्यादा वो हो रहा था अगेन आई एम टेलिंग यू द ओमानी क्रूड ऑयल हैज रीच्ड टू 150 मैंने बोला था एंड एट सर्टेन पॉइंट वो $165 पर बैरल पहुंच गया था सो things are getting critical, right? Overall average value of per barrel crude oil is reaching to $120 per barrel. तो कल काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड काफी ज्यादा परेशानी भरा दिन था पूरे मार्केट के लिए यस सो लाइक whether that is American, European और इंडियन मार्केट सब जगह पे आपको क्रैश देखने को मिला है जो अपना सेंसेक्स 2400 पॉइंट डाउन हुआ था and like mess are going around. So ये वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीधे तौर पे तो सभी के साथ नहीं जुड़ा बट इनडायरेक्टली एवरी पर्टिकुलर थिंग्स आर गेटिंग व्हाट वी कैन से affected. मतलब if everything is not going to settle down very soon, soon it's going to affect our food chain as well. Yes, because of fertilizers and fertilizer बनाने वाली जो companies हैं, they also use the gas and other things. तो इसके कारण क्या होगा इसके कारण प्रॉब्लम ये होगी कि वी विल बी गेटिंग शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर दैट मीन शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन सो इट्स like great concern which people are not talking but they should talk about it. राइट सो कल तो काफी कुछ ज्यादा डिस्कशन था सोशल मीडिया में कल एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन रखे आफ्टर द हाउ ईरान एक्चुअली एस्केलेटेड लाइक जब उसके सदर्न फील्ड्स में अटैक हुआ था उसके बाद सो whether that is Hakshan facility whether that is Rajnafan facility और मीना सॉरी मीनाल फैसिलिटी सो कई जगहों पे उसने अटैक किए हैं दिस इज गेटिंग क्रिटिकल एवरी डे सो लाइक आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो वेस्ट एशिया रहेगा एंड हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर फूड चेन एंड ऑयल एंड उसके अलावा जो न्यूज है आज के उसमें राइट जस्ट अ मिनट उसमें अपने पास इंडिया यूरोप जो ट्रेड एग्रीमेंट है सो इंडिया के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं दे वर इन द न्यूज नो साउंड हाउ कैन बी दिस पॉसिबल I think I'm properly audible, guys. Right. Try to refresh your page. So इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में न्यूज़ है. So उसमें जो इंडिया यूके है, that is supposed to be finalized, expected to be finalized by 1st of May. Hi Daksh. Right. जो इंडिया ईयू है, that is supposed to be finalized by the November 2026. And जो दो और मेजर वो है क्या कहना चाहिए वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक तो गल्फ कॉरपोरेशन के साथ गल्फ कंट्रीज के साथ एंड एक इसराइल के साथ राइट दिस इज बीइंग डिलेड ड्यू टू वॉर सो हो ये रहा है द थिंग इज कि व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न है ना जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसने ही बोला हुआ है कि वी आर गोइंग टू होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन कॉन्फ्लिक्ट तो एक मेजर पर्टिकुलर ट्रेड डील जो हमारी थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो जो है वो असर करेगा हमारे ऑयल सप्लाई पे
तो इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया के जो पर्टिकुलर बिजनेस व्हाट वी कैन से इंटरेस्ट हैं, वो भी इस वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. सो वी कैन सी दिस इज जस्ट नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट which is happening in Iran or Middle Eastern countries. This is like physically happening over there, but economically impacting entire world. Yes. So for now, if you look closely into the situation, Donald Trump is getting stranded from every particular direction. है ना? People have started talking about it कि भैया इसराइल जो है अमेरिका की संतान है वगैरह वगैरह. सो चीजें हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज से लॉस हो रहा है. इंडिया की करंट पर्टिकुलर सिचुएशन में देखी जाए तो जो एलपीजी क्राइसिस है, दैट मे लुक व्हाट वी कैन से calm for now, but the rate of like LPG that is coming, है ना, जो गैस हमारे यहाँ आ रहा है, that is not something जो कि हमारे लिए क्या है, what we can say, मतलब जो हमारे लिए इनफ होगा. आई मीन फॉर नाउ डेली जो है वी नीडेड 3 to 4 ships, स्मॉल एंड लार्ज, फॉर दिस पर्टिकुलर. मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं इंडिया में. सो 3 to 4 लार्ज शिप्स, लार्ज एंड स्मॉल शिप्स हमें चाहिए होते थे. For now, we are getting 3 to 4 ships in a month. The conflict has already entered into the third week, right? And third week से ज़्यादा they are going to be entered in the fourth week very soon. So this is the reason कि क्यों कई एक्सपर्ट जो है इसको प्रॉब्लमेटिक बता रहे हैं. तो इंडिया के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो काफी मुश्किल भरा रहेगा. गुड न्यूज इज कि इंडिया यूके जो ट्रेड डील है दैट माइट एंड अप completing within next month, that is 1st of May. इंडिया यू वाली तो भी ऑलरेडी had expected and discussed कि वो नवंबर में ही जाने वाली है. बट जो गल्फ वो है कॉरपोरेशन काउंसिल है उनके साथ एंड इसराइल के साथ जो हमारी एफटीएज होने थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने थे, दे आर बीइंग डिलेड ड्यू टू वॉर. अब जो सप्लाई है वो भी कमजोर हो रही है. इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज व्हाइल डिस्कसिंग द टर्म्स. सो अ लॉट ऑफ थिंग आर गोइंग टू बी देयर जो इंडिया को लॉस करेंगे, है ना. आई मीन अगर सिर्फ और सिर्फ गैस सप्लाई हमारी कंटिन्यू होती तो भी हम काफी हद तक एक पॉजिटिव सिचुएशन में होते. हाय, गुड मॉर्निंग यूस्टी. राइट, सो द थिंग इज प्रॉब्लम ये है कि जो इसराइल के साथ स्टैंड लेना हुआ इंडिया का वो थोड़ा सा नेगेटिव चला गया. मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज लाइक अभी हम बात करेंगे इंडिया फ्रांस ये सब लोग जो है वो मिलकर मीडिएशन की कोशिश अब स्टार्ट करने वाले हैं. एवरीबडी इज अवेयर अबाउट किस तरीके से प्रॉब्लम जो है होगी. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट न्यूज. सेकंड न्यूज वाज अ मार्केट क्रैश. ये बगल में दिख भी रहा होगा तुम्हें. दुनिया भर के जो मार्केट थे दे वर इन क्रैश, राइट. पीपल आर कॉलिंग इट द प्री रेसेशन मेल्टडाउन. Sensex was dropped to 3.36%, 26%, right? 2400 points जो है वो नीचे आया था. It was getting critical every day. जो ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स हैं, whether that is the fast moving goods हो, हेल्थ केयर हो, ऑयल एंड गैस हो, या ऑटोमोबाइल हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियलिटी हो, इन सब के साथ नेगेटिव देखने को मिल रहा है. पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इट. कुल मिला के कुछ नहीं तो लगभग 12 ट्रिलियन रुपीस जो है कल मार्केट से गायब हुए हैं. तो चीजें हैं, प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल हो रही है. बट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसके पैसे डूब रहे हैं. हम बात कर रहे हैं उसमें, अब उसमें भी आता है जब हम डिटेल में बात करेंगे वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट की तो सारी बात करेंगे इंडिया क्या क्या कर रहा है. ठीक है. सो इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे हैं. मार्केट मार्केट इज वॉलेटाइल, मार्केट इज पैनिकिंग. दैट क्लियरली मींस कि अब जो यूएसए है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला है. दिस इज नॉट जस्ट द लाइक इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स हो, हांगकांग हो, जापान हो, वेस्टर्न एशियन हो, यूरोपियन मार्केट हो, हर जगह के मार्केट जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. और अगर मार्केट कॉम्प्रोमाइज होता है, बिजनेस कॉम्प्रोमाइज होता है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके ऊपर बार बार जो है ना स्टिक्स पड़ना शुरू हो जाती. सो देर आर चांसेस की चीजें हों. द थिंग इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इवेंट इज जो गैस रिफाइनरीज में अटैक हो रहा है, जो ऑयल रिफाइनरीज में अटैक हो रहा है,
उसमें ट्रम्प का ये कहना कि वी वर नॉट अबाउट इट लाइक ईरान्स एग्रेशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसके कारण ये होने लगा कि द वॉर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। बहुत पहले से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। जो कैंट इवन रिजाइंड इट। सो मार्केट जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं, अभी चीजें जो है अलग अलग उसमें सेट होने वाली है। राइट। सो अभी रिसेंट जो नया इशू आया आज के न्यूज़पेपर में आया, दैट इज इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर इशू। यस, इंडिया म्यांमार अप्रोक्सीमेट सम 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। राइट, दे शेयर 1643 किलोमीटर बॉर्डर, out of which approximate 43 kilometer border is being fenced. Yes, only 43-kilometer border is being fenced, and the rest comes under the free movement regime. And FMR, that is free movement regime, right? Problem is this particular process is being restricted from last few years. Yes, so border से एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरी कंट्री घूमना विदाउट एनी परमिशन एंड समथिंग, ये पिछले कुछ सालों से प्रोहिबिटेड है, बट दैट इज कंटिन्यूअस. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि yesterday we actually arrested some foreign nationals जो कि म्यांमार के बताए जा रहे हैं, एंड वी हैव सीन द ट्रेनिंग है ना of insurgents, and we have seen the drone operation in that particular region because of this non-fencing setup. तो यहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें निकल के आई हैं जिसके बाद अब डिस्कशन ये हो रहा है कि इंडिया और म्यांमार का भी बॉर्डर जो है उसको फेंस करना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा. यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. द प्रॉब्लम इज म्यांमार हमारे लिए फ्रेंडली नेशन था. राइट. यस, म्यांमार हमारे लिए फ्रेंडली नेशन था. From last military coup in 2021, Myanmar is more inclined toward the China. So if there is a cross-border movement, right, China may help funding the Maoism, the Naxalism, the other particular negative activities and events that can be performed on Indian soil. तो फॉर नाउ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, होम मिनिस्ट्री ने उसके लिए सीधे तौर पे बात किया हुआ है कि भाई साहब जल्दी से इसकी फेंसिंग की जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट particular news was, and there is a new bill that is being presented, है ना, that is a new education bill जिस पे अभी डिस्कशन चल रहा है 2025 का. VBSA का जो बिल आया हुआ है, it has been criticized for the central overreach, and it's going to replace UGC and AICTE, जो काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और ऐसे कई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को ये रिप्लेस कर देगा. राइट. नया एजुकेशन बिल जो है वो सेंट्रल की ज्यादा ओवरीज के कारण क्रिटिसाइज हो रहा है. इवन फ्रंट पेज में ही जयराम नरेश जो है उनका स्टेटमेंट आपको वो कर रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया ये विकसित भारत शिक्षा जो अधिष्ठान बिल है 2025, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरीज और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हायर एजुकेशन में जो सेंटर का पकड़ है, सेंटर की जो पर्टिकुलर पावर है वो बढ़ा देगा. सो दे सेइंग कि दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा नेगेटिव है. गेटिंग. बाकी ओवरऑल फैशन में जो इंडिया में लोकल न्यूज़ेस हैं, उन लोकल न्यूज़ में सबसे ज्यादा जो है दैट यू कैन फाइंड इज इलेक्शन एंड इलेक्शन पॉलिटिक्स. राइट. यस, कल की एक न्यूज़ ऐसी, आई डोंट यूजुअली क्रिटिसाइज, ना एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, दिस इज फॉर द हायर एजुकेशन. विपक्ष ये ध्यान रखना है ना, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए है. हम कल बात करेंगे, मैंने अब तक इसका बहुत ज्यादा रिसर्च पढ़ा नहीं है पीआरएस में. मैं पढ़ के कल एक बार बात करूंगा तो मुझे याद दिला देना टेलीग्राम. ठीक है. सो इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स यूजुअली डोंट गिव अ क्रिटिसिज्म ऑन लाइक लाइव प्लेटफॉर्म, बट कल मुझे थोड़ा सा दुख हुआ. I mean, the position of India in this Western Asian conflict is critical. मतलब हमारे यहाँ एलपीजी और फ्यूल के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने वाले हैं. क्यों बढ़ने वाले हैं? बिकॉज दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. So if that fuel prices are increasing, that clearly means कि we need to have a serious concern, serious discussion on this.
And yesterday I saw two, three major event in the Twitter, जिसमें हमारे Prime Minister जो है, he is addressing either the election rally or he is in the BJP office discussing about the upcoming state elections. See, again, election लड़िए, उनका पूरा अधिकार है. We have all the political right we need, right? But I think this is a high time when we should understand that there is a crisis that is going on around the world and it is affecting India. So इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शन चल रहा है. Majority of our leadership, which is supposed to take care of us, is busy on election, whether that is our home minister, our defense minister, the CMs of different states, our prime minister. Lots of people are just only involved into the politics. Very less information is coming out how the government is planning to tackle the coming energy crisis, the coming fertilizer crisis, the coming food crisis, coming inflation. A lot of thing is going to be there. अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़े तो हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे. यू आर वेल अवेयर अबाउट इट. बट ये वही होगा कि जब लास्ट मोमेंट आएगा ना, तब गवर्नमेंट को याद आएगा जब पानी सर से ऊपर जाने लगेगा. एंड तब तक काफी पर्टिकुलर लोग जो है उससे अफेक्ट हो चुके होंगे. सो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन एंड कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इनटू द पॉलिटिकल वर्क ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आवर होम मिनिस्टर एंड सम अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की फॉर नाउ जो पॉलिसीज होनी चाहिए, वेदर दैट इज फॉर द इंटरनल पॉलिसी एंड फॉर द एक्सटर्नल पर्टिकुलर पॉलिसी, इन सबको अफेक्ट कर रहे हैं. राइट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो. चलो अब बात करते हैं वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के. राइट, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज ये ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि द वे इट लाइक ईरान रिटालिएटेड फ्रॉम लास्ट 2 days. राइट, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड. मतलब द वे नहीं, अमेरिका मेरे पास नहीं आएगा. आई डोंट हैव ऑयली स्किन और लाइक ऑयल इन माय फील. बट ठीक है, चलो पॉइंट करते हैं. फ्रॉम लास्ट 2 days अगर मैं बात करूं, आफ्टर दैट गैस अटैक है ना, जो गैस फैसिलिटी में अटैक हुआ था ईरान के बाद, उसके बाद द रिटालिएशन इज ह्यूज. मतलब Iran and Hezbollah, they put coordinated attack on 10 countries, where Israel and nine Gulf countries were there, right? And out of all the targets, 90% targets were oil and gas facilities, right? Rest 10% is American military or other infrastructure. राइट. सो थिंग्स आर गेटिंग इंटेंस. और ये रीजन है कि आज मतलब कल जब मार्केट खुला और आज जब खुलेगा, दिस इज नॉट मी, दिस इज एक्सपर्ट्स आर सेइंग, देन वी आर गोइंग टू सी अनदर पर्टिकुलर लो. राइट, 2021 2022 के बाद द प्राइस इज एट 120 barrel per dollar per barrel, right? And this is going to be continuously increasing. Omani oil reaches to 170 at one point, 165 for the long period of time in a day, then ended up in 152. So दुनिया भर में जो क्राइसिस, दुनिया भर में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल. सो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट मिलिट्री अपडेट्स की जो हमने निकाली है. सो दिस पर्टिकुलर शिट पर्सन, बीबी नेतन्याहू, है ना, ही इज द वन जिसके कारण ये दुनिया परेशान है. आई मीन, अगेन मैं पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे भरोसा नहीं करता था, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई अंडरस्टैंड कि दिस इज द गाय हु डजंट वांट पीस, हु डजंट वांट एनी पर्टिकुलर कंट्री टू टॉक, हु डजंट वांट ईरानियन लीडरशिप टू टॉक टू एनीवन. जो अली लारिजानी है, who was assassinated 2 days back, he was in contact with a US official from the backdoor channels, and there are news that they were initiating the talks. And when the Netanyahu got to know this, he attacked on him and he assassinated on him. राइट. सो नेतन्याहू अभी रिसेंटली जो है अपने नेशनल टीवी के एड्रेस पे आए, है ना,
प्रेस कॉन्फ्रेंस was televised जिसमें उन्होंने बोला Israel acted alone in the recent strike against the Iran South Pass gas field. Right. He explicitly denied driving the United States into the strike, but noted that President Trump had since requested a hold on the further attacks on the oil field. So ये आके ये कह रहा है कि भैया I'm alone responsible for the attack on the past gas field, right? And I was the one who ordered all the things. अनुराग यू आर करेक्ट। अब नेतन्याहू और ट्रम्प ने परेशान कर रखा है। ये जो नेतन्याहू है और ट्रम्प है, लाइक पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पीपल इन देयर कंट्री, दे शुड कम अगेंस्ट देम because these idiots are actually dragging everything into the war and सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। So नेतन्याहू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि we acted alone. Similar sort of a statement was published by American President Donald Trump. We were not informed into like about this particular strike, and we had discussion that Israel is not going to be, like escalate further on the oil and gas fields, and we request Iran not to retaliate or else we will use force. So तुम पहले बैंड बजा दो ईरान की और उसके बाद ईरान कुछ ना करे। ईरान ने भी धमाकेदार वो किया हुआ है। That's what like that's what the experts are saying, Dakshna. Iran like Israel doesn't want a peace talk. So नेतन्याहू जो है उसका पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुका है। अब नेतन्याहू ने ये भी पर्टिकुलर बोला है कि द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्री कोर ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड थ्री कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर campaign is eliminating the nuclear threat from Iran. This is the same nuclear threat Benjamin Netanyahu is talking from 1998, right? Yes. From 1998, this guy is saying Iran is just 6 months away from making a nuclear weapon. From like, I don't know how, but maybe for him, the time is relative. 1998 से अब तक 28 years हो चुके हैं। I'm not sure कि उसके लिए वो 28 years था या 2-4 महीने ही थे। But 1998 से ये रोना धोना चल रहा है कि the Iran is just 6 months away from making the nuclear weapon. So उसका ये कहना है कि the primary three core objective of this particular campaign is first to neutralize the nuclear threat from Iran. Second, he mentioned about the removal of ballistic missiles. Right? ये वो particular country है which already has a nuclear weapon, who didn't sign the non-proliferation treaty, who didn't allow the officials of International Atomic Energy Agency to inspect their weapon and nuclear facility. And he's saying they are going to remove the nuclear threat and ballistic missile capabilities of Iran. And he said the third core objective is to broader military neutralization कि मिलिट्री जो है हम खत्म कर देंगे। Now, these are some particular very heinous targets or objectives, right? First of all, you don't have any particular proof that Iran is having a nuclear weapon, right? And Iran never claimed to make it, and Iran never shows an intention to make it. There is a video that was surfacing yesterday in the social media, Twitter, where the scientists have told the Ayatollah Ali Khomeini that we had successfully made the ballistic missile with the range of 2,000 to 2,200 kilometer. Right now, if you will permit us, we will go for 5,000 kilometer. He said we don't need 5,000 kilometer ballistic missile range ballistic missile because we don't have that sort of threat कि हमें दूर हो। Then they asked about the nuclear weapon, and he strictly denied that weapon of mass destruction is against the Islamic faith, Islamic concept. So we are not going to make any nuclear weapon as well. So yesterday this particular video was surfacing, and majority of people were like कि जब ईरान बना ही नहीं रहा है, तो फिर इसराइल का ये पर्टिकुलर जो कैंपेन है वो किसके लिए है? And what if like after this campaign, Iran will get to know कि if we are having a nuclear weapon like North Korea, the Americans and Israelis are not going to attack us anymore, and Iran will make like put more effort to make nuclear weapon, and if it will become a nuclear power, फिर तो पूरा Middle East जो है destabilize हो सकता है,
वहां पे जो है वो एक बड़ा दादागिरी करने वाली कंडीशन में आ जाएगा। सो पीपल एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि भाई अब बेंजामिन नेतन्याहू को समहाउ सबक सिखाना एंड समहाउ रोकना दोनों जरूरी है। लास्ट ईयर अगेन 12 डेज वॉर में यही पर्टिकुलर मोटिव था कि we attacked on Iranian nuclear facilities because the intel came that they are 6 months away from making a nuclear weapon. So they attacked on nuclear facilities, they killed their nuclear scientists, researchers. That's they claimed. And again, just after 1 year, not even after 1 year, right? After 10 months, they are attacking again on this. सो यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा स्टेटमेंट एंड एड्रेस था, इट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर सेवरल डिफरेंट रीजन, राइट? मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स वर हिलेरियस भाई साहब। मतलब एक ने तो यही कह दिया था कि भाई तू एआई में ही अच्छा लग रहा था, ओरिजिनल आके ना काफी टेंशन दे रहा है और तू बहुत गद्दार भी है, राइट? सो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो फ्रंट्स हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं एक्सपांड। Yes. So a report indicates that Israeli attacks have reached as far as Caspian Sea. Meanwhile, an American F-35 aircraft reportedly made an emergency landing after coming under Iranian fire during a combat mission over Iran. सो अब जो नया फ्रंट है वो कैस्पियन सी बन चुका है, कैस्पियन सी तक अटैक हो रहे हैं। एंड पैरेलली एक F-35 जो है उसको भी क्या किया गया है, मतलब डैमेज किया गया है, जिसने इमरजेंसी लैंडिंग जो है रिपोर्ट करी है। ट्रम्प, अब हम बात कर लेते हैं अनदर अनदर शिट पर्सन की। मैं मतलब आई हैव सीन, देखो अगेन मैं इंस्टाग्राम में हूँ एंड आई सॉ वन वीडियो जहाँ पे डार्क ह्यूमर चलता है बहुत ज्यादा, लाइक डार्क ह्यूमर। सो वन ऑफ द पर्सन आस्क्ड अनदर पर्सन द व्हाट आर द ओनली पीडोस अमेरिका वांट टू फायर, राइट? एंड द अदर पर्सन सेज व्हाट, तो उसने बोला टॉर्पीडो, राइट? यस। सो कहीं ना कहीं अब जाकर थोड़ा सा मुझे इस चीज पे भी भरोसा होने लगा है कि वो जो एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प का नाम है, बिकॉज ही इज ओपनिंग अनदर फ्रंट अगेंस्ट क्यूबा। क्यूबा पिछले लाइक ऑलमोस्ट 48 आवर्स से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में जा रहा है। एंड ईरान में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है, बट क्यूबा एक और फ्रंट वो कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि दिस इंटायर वॉर इज अ कवर अप सो दैट पीपल शुड फॉरगेट अबाउट द एप्स्टीन फाइल एंड दैट इज अ मिड टर्म इलेक्शन, तो उसको ज्यादा लॉस ना हो। सो ट्रम्प के अब जो मेजर कंसिडरेशन है ईरान में, नो, नेतन्याहू से तो वर्स नहीं है। नेतन्याहू इज अ मैनिएक, जी, जेनोसाइडल मैनिएक। मतलब he has killed 73,700 people in the Gaza, out of which 30% were killed. So Netanyahu and Israel Defense Forces are, you remember yesterday we discussed about it, that 41% of the children's life जो इस टाइप के अटैक्स में जिनकी डेथ हुई है, जो लॉस्ट है, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है दैट इज इसराइल। So Israel is that sort of country which doesn't hesitate, and I think that that is their weapon. That is their the plan to attack on schools or hospital and civilian infrastructure. तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा लगता है कि इसराइल somehow is like genocidal tendency उसके अंदर है। ओके, कम ऑन, है, तभी दिखता है। खैर, अब हम ट्रम्प के स्टैंड की बात कर लें। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चीजें वो करी हैं, रिपोर्ट करी, उसकी बात करें तो they are thinking about the deployment of troops in the West Asia. So उन्होंने ईरान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, बट दे आर सेइंग कि वेस्ट एशिया में ट्रूप्स जो है उनको डिप्लॉय करेंगे। एंड दे आल्सो आस्क फॉर द $200 billion emergency war fund from the Congress to continue. 200 billion for the Iran attack demands Pentagon. There's something wrong about the entire movement. Yes, that is what we are saying. So मैंने कल भी बोला था कि लाइक ऑलमोस्ट 20 डेज के वॉर में लाइक 12 to 15 बिलियन डॉलर डायरेक्ट जो है वो किए गए हैं, यूज किए गए हैं।
but there are like $3 trillion from the market that is being vanished, a lot of different aspect as well. तो अमेरिका में लॉस हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फ्रॉम अमेरिका फॉर अ war fund, right? So that clearly means it's going to be long. And if Americans are considering boots on ground या troops on ground against Iran, ये $200 बिलियन कब 2 ट्रिलियन हो जाएगा लोगों को पता भी नहीं होगा. Because this can actually make a huge mess. ईरान में ट्रूप्स उतारना अपने आप में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. अब जो रीजनल या गल्फ एस्केलेशन है उस पे थोड़ा सा नजर डाल देते हैं कि क्या क्या कह रहा है गल्फ एस्केलेशन में. तो ईरान की तरफ से जो जीरो रिस्ट्रेंट वार्निंग है, राइट, दैट इज समथिंग जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है. So Iran's foreign minister Abbas Araghchi wanted a zero restraint if Iranian infrastructure is targeted again. Tehran has already retaliated, striking Qatar's Ras Laffan gas hub. मैं तुम्हें बता दूं ये पर्टिकुलर जो लफान वो है गैस हब है, दैट इज समथिंग जिससे दुनिया का 20% गैस सप्लाई होता है. इन इंडिया का 50% गैस आता है. जी हाँ. सो उसने उस फैसिलिटी पे अटैक किया है विच इज एक्चुअली डायरेक्टली एसोसिएटेड विद 1/5 ऑफ टोटल वर्ल्ड्स गैस सप्लाई. तो कतार का जो रास लफान गैस हब है उसमें एंड इशूइंग इवैक्यूएशन वार्निंग फॉर द ऑयल फैसिलिटीज इन सऊदीज एंड यूएई. सो कतार, राइट, सऊदी एंड यूएई ये मेन टारगेट्स हो गए हैं ईरान के लिए एंड देयर ऑयल फैसिलिटी आफ्टर द अटैक ऑन देयर पास आइलैंड पास गैस फैसिलिटी, राइट. जो वो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी कल एक रिपोर्ट आई है वो भी मैंने नोट डाउन की है, राइट. ये वो पर्टिकुलर स्टेट है जो हॉर्मूज है वहां की बात कर रहा हूँ तो मैं वहां पे लिख देता हूँ, राइट. ये वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जहां पे 100 शिप्स पर डे जो है वो निकलते थे, राइट. यस, बट इन द मार्च इटसेल्फ, राइट, 6 शिप्स जो है उनको परमिशन मिली है. सो शिप मूवमेंट थ्रू दिस क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिट पॉइंट हैज plummeted from 100 ships per day to roughly 6 ships as of March. सो सोचो जिस जगह से 100 शिप्स निकलते थे पर डे उससे अभी तक लेकिन फर्स्ट 15 डेज फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च में सिर्फ 6 शिप्स निकले हैं. एंड सोचो इसके कारण तो जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है जो फ्यूल सप्लाई है उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा. ठीक है, सो हॉर्मूज तो ब्लॉक है ही. जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, दिस इज द समथिंग, ब्रेंट क्रूड ऑयल इज समथिंग जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं. बेंचमार्क क्रूड ऑयल है, उसकी जो प्राइस है दैट इज $114 पर बैरल, राइट. और ये आई एम टेलिंग यू द व्हेन वॉर स्टार्टेड दिस इज ऑलमोस्ट डबल. And if everything is not going too well, and if there are more attack on oil and gas infra, and if the retaliation is more, if the Americans are planning grounds on like boots on ground, this may reach to the 200 million sorry dollar per barrel. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा. अब जो थोड़ा सा डिप्लोमेसी की भी बात कर लेते हैं जो करंटली चल रही है ना. तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या थे. तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडिया की. So the Ministry of External Affairs of India called the attacks on energy infra deeply disturbing and unacceptable, arguing an immediate cessation of hostilities to protect the global energy security. Right? हमारी सरकार still is not ready to criticize Israel. मतलब इजराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है. नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कि इजराइल इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा है क्या. मतलब इजराइल ने अटैक किया जिसके रिटेलिएशन में चीजें हो रही हैं. 50% of gas supply is coming from Lafan, right, of India, and if they are being attacked, ये एक problematic stance हो जाएगा. तो इंडिया को वहां पे कंटिन्यूस जो है जो एग्रेसिव या एग्रेशन अटैक है फ्रॉम अमेरिका एंड इसराइल उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, उनको रोकना चाहिए. बट इंडिया का स्टैंड अभी भी डिप्लोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं इसराइल की तरफ इंक्लाइंड दिखता है. Radhika, we are majorly focusing on the Hindu, right?
इंडियन एक्सप्रेस इज समथिंग जिसपे मैं थोड़ा सा कम भरोसा करता हूँ। द हिंदू इज लीस्ट बायस, हम हिंदू में वो करते हैं। अब कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, आई चेक इट आउट। चलो पॉइंट पे आते हैं। राइट, सो इंडिया की तरफ से जो पर्टिकुलर स्टांस है वो अभी भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैंने वार की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एंड देयर इज एन एक्सपर्ट, इवन जो जीडी बख्शी है, कर्नल जीडी बख्शी, राइट, इनका भी जो पहले बहुत प्रो बीजेपी सपोर्टर, प्रो मोदी सपोर्टर है, उनका भी ये मानना है कि दे आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्टांस तो प्रॉब्लम इंडिया के लिए बढ़ेगी। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, स्पेशली जो फ्रांस है, वो मीडिएशन और फ्रांस जो है बातें करने के लिए काफी तेजी से वो कर रही है। सो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन called for a moratorium on strike targeting the civilian infrastructure and direct talks between Washington and Tehran। तो उन्होंने भी ये पर्टिकुलर चीज करी है कि भाई डायरेक्ट टॉक्स जो है वो जरूरी है। एंड जो रीजनल कंट्रीज और रीजनल कंडेमनेशंस जो हैं गल्फ में, वो भी कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। So, for example, Saudi Arabia and other Islamic nation led by Saudis issued a joint statement condemning Iranian attack on the Gulf nation. Saudi Arabia warned if it reversed the right of a military response. राइट, सो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी थोड़ा सा एग्रेसिवली इस चीज को वो कर रहा है। क्योंकि कम ये लोग क्यों एग्रेसिवली अब कंडम करेंगे, बिकॉज देयर इकोनॉमी इज ऑन ऑयल एंड गैस। So if come on, like oil and gas infrastructure are being damaged, तो ये पैसा कहाँ से कमाएंगे? First thing. Second, if Iran is retaliating that hard and it started targeting the civilian infra, तो ये जो बड़ी बड़ी buildings and बड़ी skyscrapers और ये सारी चीजें हैं, right? So these are going to be compromised। और जो दुबई और अभी भी कम टू दुबई वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा मार्केटिंग में। सो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ मेस। सो अब ये लोग थोड़ा सा चीजों को एग्रेसिवली देखना शुरू कर रहे हैं। बट स्टिल आई हैव वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाई नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग इजराइल? राइट, इन्होंने एक बार भी ये पर्टिकुलर नहीं बोला कि इजराइल ने जो स्टार्ट किया है अटैक, दैट इज रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई। क्या कह रहे हो दक्ष? ऑयल बैरल ऑल टाइम हाई, बट हाउ इंडिया इज सस्टेनिंग दैट? दे आर समहाउ दक्ष, देखो, इंडिया इज सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला, अनडाउटली हर कंट्री रिजर्व रखती है। सो इंडिया के पास भी ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं 20-25 डेज के। सो करेंटली हो सकता है वो 15-20 डेज के हो, बट हैं। राइट, एंड दूसरा, एक बहुत सीक्रेट वेपन है इंडिया के पास, इंडियन पब्लिक के पास करेंटली, जिसका एंड पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़े हैं, दैट इज अपकमिंग इलेक्शन में वोटिंग। आई थिंक आई नीड टू हेजिटेट, नो? हाँ, सॉरी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है, चलो। दुनिया भर में जो ऑयल क्राइसिस है, उसकी एक प्रॉपर डिटेलिंग एक रिपोर्ट मुझे मिली थी, है ना, जो इन्होंने क्या कहते हैं द गार्डियन ने पब्लिश की थी। तो उस पे के कुछ मेजर पॉइंट्स जो है वो मैं लेके आया हूँ। तो अब अपन बात कर लेते हैं। Why did Iran attacked on Dubai? Anurag, Iran did not attacked on Dubai. Iran attacked on the US infrastructure, whether that is the military or economic infrastructure located in the Gulf region. अभी भी मैं एक भी रिपोर्ट, whether that is अल जजीरा या इजरायली न्यूज़पेपर्स हो या लोकल गल्फ न्यूज़पेपर हो, आई डिडंट गेट एनी ऑफ द न्यूज़ जिसमें ये बोला गया हो ईरान हैज डायरेक्टली अटैक्ड ऑन द एनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ऐसा होता है कि ड्यूरिंग अटैक एंड इंटरसेप्शन कुछ डिब्रीज होती हैं जो किसी सिविलियन इंफ्रा में या कुछ लग जाती है, बट द टारगेट वाज ऑलवेज ऑन द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इवन जब बैंक्स में अटैक हुए थे ईरान के, तो उसने ये बोला था कि बैंक्स वालों संभल जाओ, हम अटैक करेंगे, तुम छुट्टी हो कर सकते हो। इवन व्हेन दे अटैक्ड ऑन 9 कंट्रीज ऑयल इंफ्रा, गैस इंफ्रा, दे पब्लिश्ड अ वार्निंग, यहाँ पे जो भी सिविलियंस है वो चले हैं, वी आर गोइंग टू अटैक ऑन। तो ईरान समहाउ एक एथिकल तरीके से, जो वॉर के एथिक्स होते हैं, उससे लड़ रहा है। बट आई डोंट थिंक इसराइल एंड अमेरिकन्स आर लाइक फाइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वॉर एथिक्स। मतलब मिनार में 165 बच्चियों को मार दिया, एंड उसके बाद कह रहा है लाइक फॉर फन। हाँ, he said we attacked on Iran for fun, and Israel is targeting the civilian infrastructure. Israel is targeting the elected supreme leaders and the high-level diplomats,
राइट? दिस इज समथिंग जो गलत है। अनुराग, यस, एयरपोर्ट पे नहीं लगा, एयरपोर्ट के आसपास गिरे हैं। एयरपोर्ट के आसपास मिलिट्री इंफ्रा है वहां पे। कौन, अगर अमेरिका का एयरबेस है, आर्मी बेस और एयरफोर्स बेस है, तो उसको उड़ान भरने के लिए जगह तो चाहिए ना। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। सो चलो, ऑयल प्राइसेस पे एक रिपोर्ट मिली थी, काफी अच्छी थी, तो मैं सोचा था मैं शेयर करूं। So, 2026 global oil crisis is unfolding, driven by the geopolitical conflict in the Middle East, specifically threat to the Strait of Hormuz, has sent the crude oil price to $120 per barrel. The crisis mirrored the 2022 shock, right, causing severe disruption in the supply and sharply rising prices of gasoline, which is petrol, diesel, jet fuel, prompting the warning of inflation in the global economic stability. So for now, ये रिपोर्ट कह रही है कि the oil crisis is mirroring 2022 crisis, और अगर ऐसा हुआ तो जो चीजें आएंगी उसमें सबसे पहली चीज आएगी इन्फ्लेशन, राइट। दूसरा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और ये चीज कहीं ना कहीं सही होती दिख रही है। अब जो की फैक्टर्स हैं मॉडर्न ऑयल क्राइसिस के, जो उसको उन्होंने प्रॉपरली वो किया कि आज के जो प्रॉब्लम्स हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में, तो उन्होंने सबसे पहले बात की हुई है सप्लाई चेन की। किसकी बात की? सप्लाई चेन की। Markets of the Middle East, right? Distillates, diesel, jet fuel are often under the greater stress than crude oil, noted Harvard Business Review. So Harvard Business Review कहना है कि जो मिडिल ईस्टर्न डिस्टिलरीज है, वहां पे कहीं ना कहीं ये चीज प्रॉब्लम होती है। एंड सप्लाई चेन अभी के टाइम पे हॉर्मूज के कारण जो है वो काफी चोक्ड अप है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि जो करंट इंफ्रा अटैक है, वो आगे चल के काफ़ी चीज़ें जो है वो खराब वो करेगा, प्रॉब्लमैटिक करेगा। So attacks on pipelines, tankers, processing facilities in the Middle East directly triggers the sudden price hike and for the longevity of these hikes. For example, जिस particular Lafan gas facility में ईरान ने अटैक किया, to build that facility, it took 15 long years to create that infra. So if there are units which are being attacked and वहां पे damage हुआ है, to recover and to rebuild it, it will again take years. Let's say years नहीं भी लगे और 6 महीने भी लग गए, तो 6 months के लिए, even after ending the war, the oil supply, the gas supply will remain क्या कहना चाहिए, under constraint, राइट। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपेक प्लस, इनके लिए भी प्रॉब्लम किया हुआ है। सो कई बार उन्होंने लिखा हुआ है कि द मेजर प्रोड्यूसर कैन क्रिएट और वर्सन द शॉर्टेज एज रिपोर्ट ऑफ द राइटर्स। सो कई बार होता ये है कि जो मेजर प्रोड्यूसर्स है ना, दे रिड्यूस their production so that the according to the demand the price can rise, and this is what they are planning by by reducing the production, by halting the production, price will increase, एंड इफ दे गेट अ डील, उससे काफी कम माल में काफी ज्यादा फायदा कमा सकते हैं वो। एंड जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं उनके मार्केट में पैनिक है, दूसरी चीजें। तो जो की फैक्टर्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे ऑयल क्राइसिस को बनाया है, ऑल ऑफ देम आर अंडर द अटैक। वो सारे के सारे की फैक्टर्स जो है अभी के टाइम पे ट्रिगर्ड है। क्या सप्लाई चेन है सही? द आंसर इज नो, राइट। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं? द आंसर इज नो, right? OPEC plus is supplying and producing according to the market demand. The answer is no, right? क्या geopolitical tension continuously increase हो रही है? The answer is yes, and that is going to affect the market. Yes, if the market is being affected, क्या producers ज़्यादा produce निकालेंगे? The answer is no. So overall fashion में for now it may look like a war between militaries, right? But that war between militaries doesn't like come along. उनके साथ जो चीजें हुई हैं, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉर के, वो दुनिया को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सो दैट वाज व्हाट वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, और आज का जो पर्टिकुलर आज तक का जो लेना देना था वो, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई, मेरे को इतनी अपडेट्स मिलती है ना, मेरा सबसे ज्यादा दिमाग तो इस चीज में चला जाता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत। इसको वेरीफाई करते करते ना मेरे को लग रहा है मेरे बाल पक जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। खैर, लेट्स रिवाइज द न्यूज़पेपर।
ईरान Israel won't hit Iran gas facility again, says Trump. ट्रंप ने ये पहले भी बोला था. Who cares ट्रंप क्या कह रहा है? So FTA talks with Israel GCC countries may be delayed. ये अपन बात कर चुके हैं. स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर चुके हैं. Right. Iran is creating an approval process for allowing ship through Hormuz Strait, intelligence firms. So again, मैं इस particular news को verify नहीं कर सकता. जब मुझे ये न्यूज़ पता चली कि इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ईरान is creating some particular what we can say process so that it can allow the ship. मुझे ऐसा लगता है कि they are not going to do this. And even if they are going to do this, there's going to be a very harsh condition जो Americans और American ally पे लगने वाले हैं. For example, pay in yuan. ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है. बट फॉर नाउ जो भी मुझे अपडेट्स मिली उसके हिसाब से ये है कि ईरान के पास एक मेजर सबसे इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक चोक है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहता है तो अमेरिका पैनिक करेगा. अमेरिकन इन्वेस्टर्स अमेरिकन बिजनेसमैन जो है वो पैनिक करेंगे. एंड दैट इज व्हाट इट वांट. जिससे ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बढ़े. गेटिंग court castigates Mohammed Deepak for the sensationalizing the case, seeking police protection. क्या कर सकते हैं भाई. बेचारे ने अच्छा काम किया था और अभी परेशान घूम रहा है. Self-styled Godman's arrest in the Nasik rape case triggered the political law in the Maharashtra. अब क्या बोलो. मतलब खैर. The thing is कि this political connection is the reason why people who call themselves saint or something like this, they can do such kind of thing. I mean, still Baba Ram Rahim is getting parole, right? Asaram is still considered God amongst like lot of people. And others, I have lots of names जो सामने में रख सकता हूँ जिनके against cleared and convicted cases है, but people are not understanding. And reason behind this is their political connection. I mean, I still don't know when Ram Rahim is had 20 years imprisonment, तो उसको 11 बार पैरोल मिल चुकी है. Almost एक साल के लिए तो आदमी बाहर ही था. खैर, Modi Jaishankar calls for a dialogue as tries escalate. French president says India and France are working closely together to reduce the tension in the West Asian. Recent attacks against the energy installation are deeply disturbing, said Ministry of External Affairs spokesperson. ये अपन बात कर चुके हैं. फिर पूरा पॉलिटिक्स है न्यूज़पेपर में. पूरा पॉलिटिक्स है. मतलब इंडिया के जो नेशनल पेजेस हैं, मैंने अभी ब्रश करते करते दैनिक भास्कर का भी उठाया था. इंडिया के नेशनल पेजेस में सिर्फ पॉलिटिक्स भरी हुई भाई. असम इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन, तमिलनाडु इलेक्शन, केरला इलेक्शन, पौडीचेरी इलेक्शन. Nobody is talking about the crisis. These are our leaders, है ना. Nobody is talking about the LPG crisis. Nobody is talking about how we are going to manage. Everybody is busy in election. खैर, 24 states and UTs sets aside a fund for the new rural scheme job. So मनरेगा को स्कीम करके जो वीबी जी राम जी जो है वो बिल आया है और उसके लिए 24 states and UTs है फंड जो है वो अलॉट कर दिए हैं. क्या कह रहे हो? I was wondering if that 3 weeks of war can be drastic. How can countries able to sustain themselves during World War? Even how the hell Germany survived? Dude, फिर वो तो फिर भी 6-6 साल के थे. Remember, Britain and France fought for 113 years. है, wars are costly. wars जो है ना उसमें असली प्राइस पब्लिक पे करती है. मतलब लोग लड़ लेते हैं. There is a famous quote. I'm not sure people will understand. मैंने अभी recently अपने WhatsApp स्टेटस में भी डाला था. And which I liked it. मुझे बहुत ही deeply वो पता चला. So the quote says the war will end, wars will end, and the leaders will shake hands. And that old woman will remain waiting for her martyred son. That girl will wait for her beloved husband. The children will wait for their heroic father. I don't know who sold the homeland, but I know who paid the price. So price हमेशा वॉर की जो है ना वो कॉमन लोग ही पे करते हैं. दैट इज फॉर श्योर. नेता लोग हाथ वाथ मिला के चल देते हैं. यार फायर एंड फ्यूरी. Right, Donald Trump miscalculation in Iran is hurting the whole world.
दैट ये तो हम कब से कह रहे हैं कि दुनिया भर को हर्ट हो रहा है, राइट? खैर क्या कर सकते हैं। Losing the way, ISRO must fix issues before the launch of the next generation satellites. So ISRO के जो particular अभी वो कुछ launches fail हुए हैं, उसके ऊपर ये editorial है, एक बार देख लेना, है ना? Rest attacks on Qatar's LNG facility could impact India, ये हम discuss कर चुके हैं. But sources said we are diversifying. So let's say I hope we are diversifying. SDFC chairman जो है वो resign कर चुके हैं, ये कल से कर चुके हैं. I'm not sure about it, but I guess 1 लाख करोड़ का घोटाला था ये. Western Asian crisis rattled the fragmented aluminium supply. भाई हर एक चीज की सप्लाई जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी, दैट इज श्योर. ईरान से सिटेट्स F-35 जेट हम डिस्कस कर चुके हैं. ईरान हैंग 3 पर्सन्स फॉर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ओवर द जनवरी प्रोटेस्ट. तो ईरान में अभी भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं है. प्रोटेस्ट करने वाले 3 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई है. रशियन टैंकर इज शिपिंग मोर देन 7 लाख बैरल ऑफ ऑयल टू द क्यूबा. यस, जो सैंक्शन रशियन ऑयल है वो क्यूबा की तरफ जा रहा है. एंड क्यूबा इज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द यूएसए, और रशिया इज ट्राइंग टू हेल्प. US approved over 16 billion arms in the sales for the Gulf state hit by Iran. अब असली खेल तुम्हें यहाँ पे समझ में आने वाली कंडीशन में होगा, है ना? सो द थिंग इज कि अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों है? बिकॉज अमेरिका सेल्स गन, राइट? एंड व्हाई अमेरिका सपोर्ट वॉर? क्योंकि जब लोग लड़ते हैं तो वो बंदूक खरीदते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज बीइंग बेनिफिटेड. यस यस, आई एग्री दक्ष. US may unsanctioned Iran oil already being shipped. Right. Hmm. Hezbollah says it's battling Israel's advance in the Lebanon. लेबनान में कल की एक रिपोर्ट है, कोई एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, बट अल जजीरा का ये कहना है कि 2 दिन के एडवांसमेंट में जो ग्राउंड के एडवांसमेंट है उसमें अप्रोक्सीमेट 400 लेबनानी जो सिटीजन उनकी डेथ हुई है. खैर, Iraq's Kurdistan become a new front line for the widening war. So कुर्दिस्तान का भी पर्टिकुलर फ्रंट लाइन जो है वहां पे भी वॉर देखने को मिल रहा है. कोई ऐसी जगह है जहां पे नहीं है. एज ईरान वॉर इंटेंसिफाइड, ट्रम्प फेसेस अ टफ चॉइस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट? एंड नथिंग न्यू. ओके, सो दिस वाज आवर न्यूज़पेपर फॉर द डे. मेजर जो न्यूज थी वो यही थी कि लास्ट 2 days एस्केलेशन इज causing huge oil and energy crisis and economic crisis in the world, and we have to figure out कि कैसे इसको चीजें वो कर सकते हैं. एक और वो था कि भाई ट्विटर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको इंडिया में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है. आई होप ऐसा ना हो. बहुत सारी डायरेक्ट न्यूज हमें ट्विटर से मेरे को तो मिल जाती है, तो आई होप ऐसा ना हो, राइट? So this is it from my side for today. Right, I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें एंड लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. I'll see you in the next session. See you guys. Good day. अब मंडे से करेंगे क्वेश्चन आंसर यार. थोड़ा सा काम भी ज्यादा है मेरे पास. चलो, see ya.